Yes, can you hear me? Yes, sir. Okay. We will wait 1 minute, then we will start because student. Okay. Good morning to all. Myself, Shrey Pirzadeh, Assistant Professor, Department of Chemistry, Milia Art Science and Management Science College, Bid. We are discussing on thermodynamic second. So in the previous period, we have seen that is a entropy change in physical change and Clausius inequality. Now, today we discuss about that is a entropy as criteria of spontaneity and equilibrium. That is entropy as criteria of spontaneity and equilibrium. Now for that, consider a process A. Consider a process A, heat bath of temperature T1, well, but not perfectly insulated, loses heat slowly to its surrounding T2 during a long period of time. The bath loses a quantity of heat dq, the same will gain by surrounding. That is, here we have considered a heat bath of temperature T1, well, but not perfectly insulated, and that loses the heat slowly to its surrounding T2. Now, during a long period of time, the bath loses a quantity of heat dq and the same will gain by surrounding. Although the process is irreversible, the process is irreversible. So what is the condition for irreversible process? That is regarding the to temperature, that is in irreversible process, T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. While in reversible process, it's reverse. That is T2 is greater than T1. We have seen in the previous period. So in reversible process, that is T1 is greater than, that is T2. But a bath loses heat reversibly and the surrounding gain the heat, that is reversibly. So here bath loses heat reversibly while surrounding गेन हीट, दैट इज द रिवर्सिबल. यानी जो बात है वो हीट लूज कर रहा है रिवर्सिबली, और जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट जो है गेन कर रहा है. नाउ its entropy change is given as, therefore ds1 ds1 is equal to minus dq reversible upon t1. Therefore ds2 is equal to plus dq reversible upon t2. This is the entropy change in reversible and irreversible process. ds1 is equal to minus dq reversible upon t1, while ds2 is equal to, that is plus dq reversible upon t2. Now total entropy change can be calculated by using, that is by adding these two, that is entropy change, that is total entropy change ds is equal to, that is ds1 plus ds2. ds1 plus ds2, this is the total entropy change. Now put the values of this ds1 and ds2 here. What is ds1? That is ds1 is the, that is this is ds1.
we have put, this is ds1, we have put the value of ds1 as minus dq reversible upon t1 plus what is the value of ds2? This is the value of ds2, that is dq reversible upon, that is t2. Now see this equation. What is common in this equation? It is common, that is these two terms are common in this equation, that is dq reversible, this is common. So we have taken outside, then that is the bracket dq reversible. What remains in bracket? That is here minus 1 upon t1 remains and plus 1 upon t2 remains. So we take positive quantity first. देखिए इसमें वो माइनस 1 अपॉन t1 और प्लस 1 अपॉन t2, इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी है? 1 अपॉन t1, दैट इज t2. सो वी जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो हम पहले लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन t2, 1 अपॉन t2 and this minus 1 upon t1. So this dq reversible in bracket 1 upon t2, we have to return positive quantity first and then we have return the negative quantity, that is 1 upon t2 minus 1 upon t1. Next, now since as process is irreversible, so t1 is greater than t2, so ds is positive, ds, that is entropy change, is positive because t1 is greater than t2. Now hence during irreversible process entropy of system increases. Remember that. Hence this statement or this sentence is very important because it is asked in objective type, that is during irreversible process entropy of system increases. Remember that this increases because of in objective, that is it is asked, that is during irreversible process entropy of system dash dash, that is whether it is increases, decreases, remains constant, etc. Various time this question is asked, that is during irreversible process entropy of system dash dash, that is whether it is increases or decreases or remains as it is or zero. So remember that, that is during irreversible process, that is entropy of system increases. Remember this word, that is the increases during irreversible process. यानी irreversible process में entropy system की entropy क्या होती है? Increase होती है. Okay, so this is the very important sentence. Hence during irreversible process entropy of system increases. Now generally we can write, we have seen universe. यूनिवर्स कैसे बनता है? हमने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में सेकंड पीरियड में देखे थे. एस यूनिवर्स सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखे थे हमने, यूनिवर्स देन सिस्टम देन सराउंडिंग, अलग अलग डेफिनेशन देखे थे. तो यूनिवर्स कैसे बनता है? या यूनिवर्स किसका एडिशन है? कैन एनीबडी टेल मी? यूनिवर्स किस चीजों के एडिशन है? यूनिवर्स System plus surrounding. System plus surrounding, correct. That is universe is nothing but that is a system और surrounding. System और surrounding दोनों को मिलकर जो है यूनिवर्स बनता है, करेक्ट. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की लेना है. दिस इज ds. ds मीन्स एंट्रोपी चेंज और uni मीन्स यूनिवर्स. रिमेंबर दैट, uni मीन्स यूनिवर्स. फिर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी? वो भी क्या होगी? सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी की एडिशन होगी. Understand? So we can write that is ds of universe. ds of universe is equal to ds of system. ds of system. Sys means that is the, in short it is that is written as sys but called read as that is system, plus ds of surrounding. sur means surrounding. So that is ds of universe, because universe is nothing but the, that is it is the combination of system plus surrounding. And here we have to write the entropy of universe, entropy change of universe. So ds of universe is equal to ds of system plus that is the ds of surrounding, and it is greater than or equal to 0. That is the condition. That is entropy of universe is greater than or equal to 0. Whether it may be greater than 0 or it may be equal to 0. Now when we see that is where greater than 0 is valid for irreversible natural process. Remember that, that is when entropy of universe is greater than 0 is valid for irreversible natural process. Remember that, that is when greater than the value of universe
entropy change is greater than 0, the process is irreversible. Whereas equal to 0, see here, equal to 0, here two are greater than 0 or equal to 0. When equal to 0 is valid for reversible process. So remember that, also asked in the objective type examination, that is entropy of universe is in irreversible process is dash dash, whether it is less than 0, greater than 0 or equal to 0, etc. So remember that it is greater than 0, this condition, while in reversible process it is equal to 0. So these are the two conditions, that is entropy of universe for irreversible process is greater than 0, while entropy of universe for reversible process equal to 0. Now these are the three conditions, very important three conditions, that is the if delta S of universe is positive, if the entropy change of universe is positive. Three conditions we have to take. That is, first condition, if delta S of universe is positive, यानी delta S of universe positive होगा, then what will happen? The reaction will tend to proceed spontaneously in forward direction. Remember that, यानी अगर delta S की value positive है, that is delta S of universe is positive, the reaction will tend to proceed spontaneously in forward direction. Reaction किसमें proceed होगा? Forward direction में. This is the first condition, that is if delta S of universe is positive, the reaction will tend to proceed spontaneously in forward direction. Now second condition, if delta S of universe is negative, अगर entropy change of universe is negative है, the reaction will tend to go spontaneously, reaction spontaneously होगी, but क्या होगा? In the backward direction. Remember that, जब delta S की value positive आ रही है तो reaction forward direction में होगा, और अगर delta S की value negative है तो reaction क्या होगा? That is, it proceed spontaneously in backward direction. So this is the second condition. If delta S is positive, reaction will proceed in forward direction. If delta S is negative, the reaction will proceed in backward direction. Now third condition, अगर zero है, देखिए हमने यहाँ पे एक one time positive, we have taken positive, then negative, and lastly that is the, if it is zero, if delta S of universe is zero, the system is at equilibrium. System क्या होगा? At equilibrium, and no spontaneous process will occur. Spontaneous process occur नहीं होगा when the delta S of universe is zero. The system क्या होगी? Equilibrium में होगी. देखिए अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव है बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है, सो इट विल, system is at equilibrium and no spontaneous process will occur. So these are the three conditions, very important. These are the three conditions. So this is about the, that is entropy as criteria of spontaneity and equilibrium. So we have seen the entropy change in reversible and irreversible, and we have taken the total entropy change, and that is entropy of universe. Entropy of universe is the addition of entropy of entropy change of system plus that is the surrounding, and that is greater than 0 is valid for irreversible process and equal to 0 is valid for that is the reversible process. And these are the three conditions, that is when delta S of universe is positive, the reaction will tend to proceed in forward direction. When it is negative, then it is tend to proceed in backward direction, and when it is zero, the system is at equilibrium. No spontaneous process will occur. So this is about the. Now next is entropy changes in ideal gases. Ideal gas, we have seen ideal gas, entropy change in ideal gas. And what is ideal gas? We have seen ideal gas, the gas which obey the equation PV is equal to nRT. So that is ideal gas equation. We have seen physics वाले वगैरह अच्छी तरह से ये कह सकते हैं, that is ideal gas. So entropy changes in ideal gases. Now entropy change in ideal gas can be considered under two situations of variable. इसमें दो variables है.
one by one we see. First is when T and V are independent variable. When T means temperature and V means volume are independent variable. And second, when T and P are independent variable, when that is temperature and pressure are independent variable. Now we see one by one. First, that is when T and V are independent variable. We take that is first, that is when T and V are, that is the independent variable. That is entropy change in ideal gases when T and V are independent variable. Now for that, that is consider a ideal gas equation for n mole. Consider an ideal gas equation for n mole. So ideal gas equation for n mole क्या है? PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation for n mole. That is where P is the pressure, V is the volume, and small n number of moles, R it is gas constant, T absolute temperature. Now rearrange this equation, that is PV is equal to nRT. So इसमें से आप P की वैल्यू मालूम कीजिए. क्या होगा P? ये as it is रहेगा nRT न्यूमरेटर में, और ये जो V है नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा. तो क्या होगा? therefore P is equal to nRT upon V. क्या किया है? खाली रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को हमने. PV is equal to nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसे हमने क्या किया है? P मालूम किया है. therefore P is equal to nRT upon V. P is equal to nRT upon V. अब ये जो ऊपर का इक्वेशन है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये इक्वेशन को जो है हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो देखिए वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. नाउ डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो क्या होगा? दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ P का डेरिवेटिव लेना है. P पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये ब्रैकेट के नीचे लिखा हुआ है सफिक्स में यहाँ पे कि V का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम है. So that is, this is the differentiation of P, that is partial derivative of P with respect to T at constant volume is equal to, now nr upon V, these are constant here, nr upon V as it is. Now we have to with respect to temperature लेना है derivative. तो T टेम्परेचर, T का डेरिवेटिव क्या होगा? T का मैथ्स वाले बता सकते हैं इसमें. T का व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ T इनटू dt? डेरिवेटिव ऑफ T इनटू dt 1 होगा सर. As correct, 1 होगा. So 1 into this, that is the nr upon V. क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ T is 1, remember that. तो ये nr upon V constant है, so we have taken nr upon V and derivative of T is 1. So 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. So this is the equation number 1. Understand equation number 1, that is ऊपर जो इक्वेशन है P is equal to nRT upon V, उसका हमने क्या किया है? पार्शियल डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. So this is equation number 1, that is partial derivative of P with respect to T at constant volume is equal to nR upon V because the derivative of T is 1. Now next. Now but we know that but you remember this value. यहाँ पे partial derivative of P with respect to T at V किसके बराबर है? nR upon V. तो अगला जो इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू आएगी आपको, तो उसके बजाय आपको क्या करना है? ये nR upon V रखना है. Remember that equation number 1. Now but we know that for n moles of ideal gas, entropy change can be given as ds is equal to n into Cv upon T into dt plus partial derivative of P with respect to T at constant volume into dV. Now see equation 1 and 2. This is equation 1. This is equation 1. यहाँ पे क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. किसके बराबर है? ये nR upon V. और इक्वेशन 2 में भी देखिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV. तो इतनी क्वांटिटी के बजाय हम क्या रख सकते हैं? ये nR upon, देखिए यहाँ ये इतनी क्वांटिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है? ये दैट इज द nR upon V के बराबर है. So we can write, so this is the
n mole of ideal entropy change for n mole of gas, ds is equal to ncv upon t into dt plus partial derivative of p with respect to t at constant volume into dv. Now substituting equation 1 into equation 1 में क्या है, ये है partial derivative of p with respect to t at constant volume, और ये किसके बराबर है, nr upon, इतने के बजाय हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी के बजाय nr upon v. सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 into, तो इक्वेशन 2 क्या होगा, ds इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, ncv अपॉन t इंटू dt प्लस, अब देखिए ये क्वांटिटी इक्वेशन 2 में, ये मैं बता रहा हूँ जो पॉइंटर से, तो ये क्वांटिटी ये किसके बराबर है इक्वेशन 1 में, ये nr अपॉन v. इफ यू सी दिस इक्वेशन दैट इज nr अपॉन v, तो इसके बजाय हम nr अपॉन v रखेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये क्वांटिटी nr अपॉन v है इनटू dv, एंड वी कॉल दिस एज इक्वेशन 3. इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 बोलेंगे. Now consider that V1 and V2 be the volume of gas at a temperature T1 and T2 respectively. यानी V1 और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है. V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T1 and T2 respectively. T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर. Therefore integrating this equation 3, देखिए this previous equation 3 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे t है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगे इसके T1 to T2 होंगे इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर v है, वॉल्यूम है, तो इसके जो लिमिट्स होंगे वो होंगे V1 to V2. तो ये इक्वेशन 3 को क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है इसका, बिटवीन द लिमिट्स, यहाँ पर T1 to T2 लेंगे और यहाँ पर V1 to V2. तो देखिए आगे, दैट इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ ds, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इक्वेशन 3 में जो पहली क्वांटिटी देखिए, इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 3, ये पहली क्वांटिटी ncv अपॉन t इंटू dt, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसकी जो लिमिट होगी वो होगी T1 to T2, यहाँ पर दिया हुआ देखिए T1 to T2, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t dt है इसलिए T1 to T2 ले रहे हैं हम, T1 to T2, रिमेनिंग एज इट इज, बाकी का पार्ट एज इट इज रहेगा ncv अपॉन t इंटू dt प्लस, अब सेकंड टर्म क्या है इसमें इक्वेशन 3 में, ये है देखिए nr अपॉन v इंटू dv. तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का भी इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन लिमिट क्या होंगे यहाँ पे इसके, v1 to v2. तो देखिए यहाँ पे दिस v1 to v2 nr upon v into dv. Okay, so now take the integration, this integration derivative, it can be written as, that is the change in entropy, that is delta s. Now this n and cv, n number of mole, they are constant, cv molar heat capacity at constant volume, it is also constant, so we can constant terms we can take outside the integration, यानी जो constant terms हैं उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे. So this n is constant, this cv is constant, we have taken that is these constant terms outside the integration. Now what remains, अब रहा क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेंड T1 to T2 1 अपॉन t, ये 1 अपॉन t, ये n और cv तो कांस्टेंट है, तो उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया है, तो रहा क्या, 1 अपॉन t into dt. So this is the first quantity, that is ncv, these are constant, so we have taken outside the integration. Now integral T1 to T2 1 अपॉन t into dt प्लस, अब सेकंड में देखिए, सेकंड क्वांटिटी में जो कांस्टेंट टर्म है कौन है, n कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, n number of mole or r gas constant, so we can take outside the integration, so nr. Now integration v1 to v2, what remains, 1 upon v into dv, 1 upon v into dv. Okay, so this is, we have taken integration and that is जो constant term है उसको हमने integration के बाहर लिया है. Now one question, what is integration of 1 upon x into dx? मैथ्स वाले बता सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन. इंटीग्रेशन जैसा भी आपने बताया कि डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, करेक्ट. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t या 1 अपॉन x, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t या 1 अपॉन x, क्या हो सकता है, माइनस x. नो, फॉर्मूला है एक, log of x 1 अपॉन t. देखिए रिमेंबर दैट, log of x, log of x 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है log of x है, वो फॉर्मूला अलग है, आप ऊपर लेके जाके माइनस कर रहे
दैट इज अलग, बट एक सेपरेट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इज log x और ln x, रिमेंबर दैट। 1/t तो यहाँ क्या होगा, log t होगा इंटीग्रेशन इसका, और बाद में लिमिट तो उसके होंगे t1 टू t2, दैट इज 1/t इंटू dt का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, ln t या log t। रिमेंबर दैट ln और log की एक शक्ल है, ln t, वी कैन राइट ln, ओके, 1/t दैट इज द ln t। और 1/v का क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू dv, वही होगा log v, log v, करेक्ट, log v या ln v, अंडरस्टैंड। तो ये मेन है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड दैट इज log t, बट वी कैन टेक हियर ln t, क्योंकि ln ये log की एक शक्ल है, अंडरस्टैंड। खाली डिफरेंस इतना है कि जब ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1/t का इंटीग्रेशन हुआ ln t और log t, और 1/v का इंटीग्रेशन log v और ln v। और फिर इसके जो लिमिट्स होंगे यहाँ पे log t के t1 टू t2, और यहाँ पे log v के v1 टू v2। So put the values. So I have written directly, put upper limit and then the lower limit. So what will happen here, delta s is equal to n into cv ln t2 upon t1। ln t था देखिए यहाँ पे ln t, लेकिन मैथमेटिकल रूल में क्या था, इसके लिमिट्स थे t1 टू t2, तो उसके रूल में क्या है, पुट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखना है और बाद में लोअर लिमिट। तो क्या होगा, ln t2 माइनस ln t1, और log का फॉर्मूला है log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो ये होगा ln t2 अपॉन t1, ln t2 upon t1, understand? So I have written directly, that is delta s is equal to n into cv ln t2 upon t1। Similarly plus nr ln v था वहां पर log v, क्योंकि 1/v इंटू dv का जो इंटीग्रेशन है वो है log v या ln v, और उसके जो लिमिट्स थे वो v1 टू v2 थे। नाउ पुट अपर लिमिट log v2 माइनस log v1, देन लोअर लिमिट log v1, तो log v2 माइनस v1, तो log v2 माइनस v1 को कैसा लिखेंगे हम, log ln ऑफ या log ऑफ v2 अपॉन v1। So this is the, that is final equation, entropy change, that is delta s is equal to ncv ln t2 अपॉन t1। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आई हैव रिटन डायरेक्टली, दैट इज जो इंटीग्रेशन के जो दो स्टेप है मैंने उसको डिलीट किया है, डायरेक्टली आई हैव रिटन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t है, और फिर उसमें अपर लिमिट रखना है और फिर लोअर लिमिट और फिर फॉर्मूला। सो आई हैव रिटन द डायरेक्टली, यू सी that is n into cv ln t2 upon t1 plus nr ln v2 upon v1। this is called equation number 4। अब यहाँ पे दो कंडीशन देखना है, क्योंकि हमारा जो एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैसेस कैन बी स्टडीड इन टू, दैट इज क्या दो कंडीशन थे, पहली कंडीशन क्या थी इसकी, व्हेन t and v आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी क्या थी, व्हेन t and p आर इंडिपेंडेंट। तो हम पहला देख रहे हैं व्हेन t and v आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एट कांस्टेंट, पहले वॉल्यूम लेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, v1 इज इक्वल टू v2, v1 और v2 क्या होगा, दैट इज द v1 एंड v2 आर सेम। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 में क्या करना है आपको, ऊपर जो इक्वेशन 4 है जहां पर v1 और v2 दोनों इक्वल लेना है, v1 इज इक्वल टू v2, ये क्या होगा 1 होगा, और ln 1 और log 1 कितना है, log 1 की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, एस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, log 1 की वैल्यू मैथ्स वाले खास तौर से बता सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1। देखिए यहाँ पे v2 और v1 सेम है, तो ये रखेंगे v2 और ये v2 1 होगा, तो ये दोनों सेम है तो क्या होगा, ये 1 होगा, v2 अपॉन v1 क्या होगा 1 होगा, और ये ln है, ln या log, तो log 1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, रिमेंबर दैट log 1 इज ऑलवेज 0, log 1 0, तो 0 इंटू दिस nr क्या होगा 0, तो ये पूरी इतनी क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी क्या होगी 0 होगी, तब 0 होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, इक्वेशन 4 बिकम्स। तो ये क्या होगा, v एट कांस्टेंट वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू v2, तो क्या होगा ये ln और log 1, और log 1 की वैल्यू क्या है 0 है, 0 इंटू nr है 0 होगा, टोटल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सेकेंड क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी रहेगी खाली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या रहेगा फिर डेल्टा एस इज इक्वल टू ये n इंटू cv ln t2 अपॉन t1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने दिया इसमें, व्हेन t एंड v आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने पहले v लिया है इसमें। अब सेकंड कंडीशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2। अब ये इक्वेशन में T1 इज इक्वल टू T2 रखना है, तो ये क्या होगा 1 होगा, T1 के बजाय भी T2 रखना है, तो T2 डिवाइडेड बाय T2 दैट इज 1 होगा। फिर यहाँ पे log 1 आएगा, अगेन हियर द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। अंडरस्टैंड? तो कौन सी क्वांटिटी 0 होगी इसमें, ये पूरी पहली जो क्वांटिटी है वो 0 होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। At constant temperature, T1 is equal to T2. So equation 1 becomes, that is this T2 divided by T2, that is 1, and log 1 or ln1 is 0. 0 into this NCV, that is 0. यानी जो पहली क्वांटिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। सो क्या रहेगा फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा पहली क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी रहेगी, दैट इज द सेकंड क्वांटिटी, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR into ln V2 upon V1. So this condition is at constant volume. Constant volume पे क्या होगा, ये quantity 0 होगी, और at constant temperature ये quantity 0 होगी. So this equation becomes, so this is at constant volume and this is at constant pressure. Sorry, constant temperature, not pressure. So at constant temperature. So this is about the when T and V are independent variable. Okay, so this entropy of ideal gases is very important, because these two conditions, that is when T and V are independent variable and second T and P are independent variable, ये दोनों बहुत important है। Always 10 mark question is asked, ये दोनों में से एक आएगा एग्जामिनेशन में, when T and V are independent variable। कल के पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि when T and V are independent variable, अभी तो हमने फर्स्ट ही देखा है when T and V are independent variable. In the next period, we see when T and P are independent variable. Okay, so if Okay, sir. you have any difficulty, please ask. In the next period, we see entropy change of ideal gases. Second one, when T and V are independent, remaining part is same. बाकी का part same है. If you have any difficulty, No, sir. okay, we will stop here then. Okay. Okay, sir.